So enthalpy previous class रे हम internal energy विषय कहते internal energy is a form of energy and sum total of every possible kinds of energy. That is, internal energy is defined as the sum total of every possible kinds of energy possessed by a system under a given set of condition. कौन कहते suppose human body टा नेला जितने form of energy सब मिसे देलो that is internal energy. जदि मनुष्य न मरिच माने internal energy बॉडी रे किछि रहिछ जदि मरि गला internal energy जीरो हेता हला. सो इंटरनल एनर्जी आमे एक्जेक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी काढी परिबा नाही आमे सब बेले चेंज इन वैल्यू काढीबा एटा ला एक्जेक्ट डिफरेंशियल एटा ला कोन एक्जेक्ट स्टेट फंक्शन एटा ला स्टेट फंक्शन जे दूसरा स्टेट फंक्शन तार आमे चेंज इन वैल्यू काढीबा एक्जेक्ट वैल्यू काढी परिबा नाही जेतु सेटा स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन तार आमे एक्जेक्ट वैल्यू काढी परिबा नाही और एब्सोल्यूट वैल्यू काढी परिबा नाही आमे कोडा काढीबा चेंज इन वैल्यू टा काढी क्लियर. नेक्स्ट So enthalpy is denoted as capital H. Enthalpy is defined as the sum of internal energy and product of pressure and volume. Enthalpy is a mathematical defined कराइछि. It is enthalpy is defined as the sum of internal energy and product of pressure and volume. एटा कोन दियाइछि नोटेशन H. It is denoted as H. internal energy को नोटेशन कराइतला E और U. enthalpy को नोटेशन कराइबो कैपिटल H. enthalpy को कोटा डिनोट कराइबो मैथमेटिकली enthalpy is denoted as capital H. So enthalpy is defined as the sum of internal energy and product of pressure and volume. बर्तन देखो मैथमेटिकली H equal to E plus PV. मैथमेटिकली H equal to E plus PV. H ला enthalpy, E ला internal energy, P ला pressure, V ला volume. E internal energy, P external pressure, V volume. ये जो PV that is also called work done. PV equal to work done. So heat content is enthalpy ର अन्य नाम नाम heat content. That is, we can say that heat content at constant pressure. Simply enthalpy को हमें नहीं परिवा heat content at constant pressure. Heat content at constant pressure. तो enthalpy generally काढ़ा जाए केधरे ना constant pressure है. internal energy generally किधरे काढ़ा जाए constant volume रे. internal energy calculate हुए at constant volume रे. enthalpy calculate हुए at constant pressure. enthalpy calculate हुए constant pressure रे. internal energy calculate हुए constant volume. So it is defined as the total energy content of the system at constant pressure. Now enthalpy of the definition, it is a very important definition. Shortly we will explain. It is defined as the total heat content of the system. Enthalpy means heat content. Heat content of the system. Enthalpy meaning means heat content of the system. Heat content of the system, that is called enthalpy. Heat content of the system is called what? Enthalpy. और मैथमेटिकली तुम्हें डिफाइन कैसे करिवो enthalpy is defined as the sum of internal energy देखो H equal to E plus PV. Sum of internal energy, E ला internal energy and product of pressure and volume. 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 Sum of internal energy and product of pressure and volume. Clear? So H equal to E plus. So heat content equal to internal energy of molecule or atom plus to establish the system at pressure P or volume V from empty space. Empty space रू से तार pressure केते calculate करिनो volume केते volume V from empty space. और simple heat content of the system at constant pressure is called enthalpy. To whom we call enthalpy? It is different. Heat content, total energy content or total energy content or heat content. Total energy content or heat content of the system at constant heat content, total energy content or heat content of the system at constant pressure. Heat content of the system at constant pressure.
heat content of the system at constant pressure is called enthalpy. Heat content of the system at constant pressure, that is called enthalpy. So H equal to E plus PV. H equal to E plus PV. Mathematically, H equal to E plus PV. So heat content of the system at constant pressure is called enthalpy. Next, we have to discuss the property of the system. Properties of enthalpy. Property of enthalpy. Property of enthalpy. The enthalpy कौन? Enthalpy is defined as the sum of internal energy and product of pressure and volume. तो मुझे देखो H equal to E plus PV. H equal to E plus PV. So enthalpy is defined as the sum of internal energy, and product of pressure and volume. So enthalpy is defined as the sum of internal energy and product of pressure and volume. That is called enthalpy. That is called what? Enthalpy. So or heat content of the system at constant pressure. Simply we have to what heat content is enthalpy. Heat content of the system at constant pressure. Heat content of the system at constant pressure. Heat content of the system at constant pressure. Clear? So that is called enthalpy. So enthalpy is defined as the heat content of the system. So system रा केते heat content रही constant pressure. Constant pressure रे system रे केते heat अच्छी और केते energy अच्छी. That is called enthalpy. गोटे system रा constant pressure रे केते heat किबा energy रही that is called enthalpy. That is called what? Enthalpy. That is called enthalpy. Next property. It is an extensive property. It is an extensive property. It is a state function. It is a state function. देखो जे इंटरनल एनर्जी भी कौन थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंथैल्पी भी कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंथैल्पी जोड़ा एनर्जी टर्म थी बिकॉज़ आमी जानछे E equal to mc square. So E directly equal to m. Energy content that is m ऊपर डिपेंड करछि E एला एनर्जी E एला कौन एनर्जी m एला mass. So heat con energy form এটা भी enthalpy the form of energy তেনো এটা কি করা ছিল extensive এটা করা ছিল extensive. So enthalpy is an extensive property. Enthalpy is an extensive property. It is an extensive property. It is a state function. যেহেতু enthalpy is a state function, we never determine the exact or absolute value of enthalpy. जेहेतु enthalpy टा state function आमे तार exact value काढी परिबा नाही आमे केवल तार change in value काढी परिबा. Clear? Enthalpy गोटे state function. Enthalpy गोटे extensive property. जेहेतु enthalpy state function आमे enthalpy रो exact value काढी परिबा नाही केवल तार change in value काढी परिबा. Clear? We never determine
we never determine the absolute, we never determine the absolute, or we never determine the absolute or exact value of enthalpy, rather we only calculate the change in value of we never determine the absolute or exact value of enthalpy, rather we only calculate the change in value of enthalpy. यदि आमे केवल enthalpy रे change in value काढिबा, exact value काढिबा नाही, that is like dilution आइतला, it is equal to H2 minus H1. So H2 H1 ला enthalpy in the initial state, H2 enthalpy in the enthalpy in the initial state, enthalpy in the initial state, enthalpy in the final state, and del is change in enthalpy. There is change in enthalpy. H1 enthalpy in the initial state, H2 enthalpy in the final state. Clear? So these are the properties of an outer property. Del H cyclic equal to 0. All state functions, if you take the cyclic integral of all state functions, all state functions del, suppose del is del u del g equal to 0. All changing state functions is 0. এটা কোন রাখো, all changing state function দেখো del is del u enthalpy of the changing enthalpy, changing energy, changing free energy हम पर बढ़िया free energy को लागू करेंगे. del is that is del u equal to 0. del is এটা को del is equal to not 0, del is cyclic, del u cyclic, del g cyclic equal to 0. Del H cyclic equal to 0, del U cyclic equal to 0, del G cyclic equal to 0. So all changing state functions is all cyclic changing state functions is 0. All cyclic changing state functions is 0. So enthalpy, it is an extensive property, it is a state function. We never determine the absolute or exact value of enthalpy, rather we only calculate the change in values of enthalpy. That is equal to H2 minus H1. H1 enthalpy in the initial state, H2 enthalpy in the final state. Clear? And cyclic value of cyclic changing enthalpy, all cyclic changing state functions is 0. A point of very important point.
all cyclic change in state functions is 0. Del H, del U, del G, that is equal to 0. So all cyclic change in state function, all cyclic change in state functions is 0. Clear? So this is all about enthalpy. So enthalpy called enthalpy la total heat content of the system at constant. It is defined as the total energy content of the system, or we can say that total energy content of the system. It is defined as the total energy content of the it is defined as the total energy content of the system at constant. It is defined as the total energy content of the system at constant pressure. Total energy content of the system at constant pressure, or it is defined as the total heat content of the system at constant pressure. Simply total system रा केते heat content अछि constant pressure. System रा केते heat content रहिछि, system रा केते heat content करिछि at constant pressure रे ताको कोन कहबा enthalpy. Enthalpy का कहबा heat गोटे सिस्टम टा केते हीट कंटेंट करछि एट कांस्टेंट प्रेशर रे ताको कहबा एंथैल्पी. मैथमेटिकली एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी, दैट इज H इक्वल टू केते आस्तला E प्लस पीवी. E हला कोन इंटरनल, P हला प्रेशर, V हला वॉल्यूम, V हला कोन वॉल्यूम. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी. Next we have to calculate what is the relationship between enthalpy and change in enthalpy and change in internal energy. Next we have to derive a relation between enthalpy change and internal energy change. This is very important. Basing upon the relation, we are putting short questions and problems. And जो स्टेट फंक्शन से को द डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िना मैथमेटिकली all state functions are exact differentials and it satisfies Euler's theorem. All state functions are exact differential and it satisfies Euler's theorem. Clear? Relationship between del H and del U. Next is relationship between del H and relationship between del H and del E. Relationship between del H and del E. Next, consider a system at constant pressure. मतलब ये जो सिस्टम है, देखो ये जो सिस्टम वन सिस्टम टू एरा इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट. मतलब ये जो सिस्टम ना इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में ले R H N1 कहते नंबर ऑफ मोल्स N1, एंथैल्पी H1, वॉल्यूम V1, इंटरनल E1, प्रेशर कांस्टेंट अछि एटी N2, H2, V2, बता देखा वेरी सिंपल जिनस एटा वाला इनिशियल स्टेट और सिस्टम 1 एटा सिस्टम 2 बता एटी प्रेशर का हमें कांस्टेंट लेले एटी जगह नंबर ऑफ मोल्स N1, एंथैल्पी H1, वॉल्यूम V1, इंटरनल E1.
but then it was the state of the system changes or initial state to final state property magnitude properties or fundamental properties of the system that is changes, basic parameters that changes. So that is etala n2, etala h2, etala v2, etala e2, etala e2. बर्तमान ए जो चेंज हला सिस्टम 1 को सिस्टम 2 और इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट बर्तमान कौन चेंज हो देखो we know that A is equal to E plus PV. We know that A is equal to E plus PV. That is equation 1. So let us go equation 1 again. We know E equal to A plus PV from definition of enthalpy. आमे enthalpy रो definition तो जानि छै कोन A is equal to E plus PV. Mathematically जिंस जानि छै A is equal to E plus PV, that is we know from enthalpy equation. Enthalpy रो equation mathematically कहइतली A is equal to E plus PV. बर्तमान एठी धरा आमे नदिबा H1 equal to E1 plus PV1, H2 equal to E2 PV2, H1 equal to E1 PV1, H2 equal to E2 PV2 और H2 is equal to E2 PV2 minus E1 PV1. एटी H2 minus H1 केते आछे del H एटा को देख परिबा E2 minus E1 plus V2 minus P1 or del H equal to E2 minus E1 del E plus P del V. देखो आंसर कहि दोछि जदि हमें एटाको कांस्टेंट प्रेशर नेले जदि हमें कांस्टेंट प्रेशर नेले ताले ए जो डेरिवेशन ताको एटाको एटी हे जिवो h1 इक्वल टू e1 प्लस p1 v1 h2 इक्वल टू e2 प्लस p2 v2 तनो एटी आसीबो h2 माइनस h1 इक्वल टू e2 माइनस e1 प्लस p2 v2 माइनस p1 v1 एटी आसीबो del H equal to del E plus del P दिने जिनसटी आसीबो ए फॉर्मेट रे नहीं पानी आमे भी कंसीडर कर दिछे सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर जदि कांस्टेंट प्रेशर कंसीडर न कला ताले तबे ए फॉर्मेट नबो h1 equal to e1 plus p1 v1 h2 equal to e2 p2 v2 h2 minus h1 केते आसीबो del H e2 minus e1 del E plus p2 v2 minus p1 v1 एटा आसीबो del pv del केते del pv del बर्तमान एटा को तुमे जरा कांस्टेंट प्रेशर नै जिवो ए इक्वेशन रो तुमे काढी परिबो दिटा जिंस काढिबो जदि कांस्टेंट प्रेशर नबो तार केते आसीबो del H equal to del E plus p del v एटा ला कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट pressure at constant volume del A is equal to del E V del E এই দুটো ইকুয়েশন में पास करिबो वेरी इंपोर्टेंट देखो एटा में ए एलिमेंट डिराइव कर परिबो जदि प्रेशर कांस्टेंट न लेलो लिखिबो डायरेक्ट वी नो दैट H equal to E plus PV
आमे जानिछे h इक्वल टू e प्लस pv, h1 इक्वल टू केते e1 प्लस p1 v1, h2 इक्वल टू e2 प्लस p2 v2। जने h2 माइनस h1 केते आसे del h इक्वल टू e2 माइनस e1 del e प्लस p2 माइनस p2 v2 माइनस p1 v1, दैट इज del pv। এই ইকুয়েশনটা আসলা এটা হলো ইকুয়েশন 1। তারপরে যদি কনস্ট্যান্ট নেই গেল কনস্ট্যান্ট প্রেসারে কোন আছে p টা কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে গেল p del v, যদি ভলিউম কনস্ট্যান্ট হলো v টা বাইরে চলে গেল এটা। তাহলে এই যে ইকুয়েশন মনে রাখো, এই ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 2 ইকুয়েশন যদি এই বলে ডেরিভেশন করো আর যদি এই বলে গেল del h equal to del e plus p del v, এটা भी আসছে del h equal to del e plus p del v, কিন্তু এটা জেনারেলি কেতে আসিব কনস্ট্যান্ট প্রেসার। এটা আমি সেদিপাই আগুন ধরব, যদি আগুন ন ধরিব তুমি এই বলে আমি কই পাই এই বলে আমি যেহেতু কনস্ট্যান্ট সিস্টেমের কনস্ট্যান্ট প্রেসার ধরছি, প্রেসারটা কনস্ট্যান্ট হচ্ছে আমরা সব ভেরিয়েবল আছে, বর্তমান এটি আমি কিছু প্রেসার কনস্ট্যান্ট ধরনি, এটি লাস্ট দুইটা মেথড এইপারি হলা। বর্তমান দুইটা মেথড করলে আমার আসুচি এক্সাক্ট ভ্যালু del h equal to del e plus p del v, এই জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন। বর্তমান এই ইকুয়েশন যদি প্রেসার কোন জিনিস কনস্ট্যান্ট ন দিব এইটু তুমি বাদ দিব, দুইটা ভেরিয়েবল আছে আপনি প্রেসার আর ভলিউম, যেটা প্রেসার কনস্ট্যান্ট p টা বাদ দিব, যেটা ভলিউম কনস্ট্যান্ট দিব v টা বাদ দিব। দেখো যদি এই ইকুয়েশন অনুসারে তুমি ডিরাইভ করলো এইগুলা ডিরাইভ করলো এইগুলা এটা কাটি দিবি। We know that h equal to e plus pv, h1 equal to e1 plus p1 v1, h2 equal to e2 plus p2 v2, h2 minus h1 এটা মাইনাস এটা कर दो, এটা মাইনাস এটা कर दो কত আছে e2 minus e1 p2 v2 minus p2 v2 minus p1 v1, p2 v2 minus p1 v1। so del h equal to del h equal to del e plus del pv, del h equal to del e plus del pv, del h equal to del e plus del pv, p2 v2 minus p1 v1 কত আছে del pv। বর্তমান এই যে ইকুয়েশনে যদি প্রেসার কনস্ট্যান্ট হলো এটা আছে এর কনস্ট্যান্ট প্রেসার del h equal to del e p টা বার বুঝিব del v রইল, যদি ভলিউম কনস্ট্যান্ট হলো v টা বার বুঝিব del v রইল। এই তিনটা ইকুয়েশন আছে 1 2 3। আর এটারে আমি এবারে যদি করব আগে প্রেসার কনস্ট্যান্ট নেই হলো তাহলে কত আছে del h equal to del e plus p del v, এটা भी डायरेक्ट আছে এটা বর্তমানে এই যে p del v ডালা ওয়ার্ক ডান, p del v ইজ ওয়ার্ক ডান। সো সেটা এপটে भी নেবে। नेक्स्ट इज द एपटे नेला we know that p del v equal to w which is equal to work done। কারণ del h equal to del e plus এটা হয় ইকুয়েশন 2, del h equal to del e plus w। ক্লিয়ার? এই ইকুয়েশনটা মনে রাখবো, এটা হলো ইকুয়েশন 1, ইকুয়েশন 2 কনস্ট্যান্ট প্রেসার এগুলো আসবে, কনস্ট্যান্ট ভলিউমে এগুলো আসবে। এই তিনটা ইকুয়েশন মনে রাখবো 1 2 3। এটা মনে রাখলে 1 2 এই দিকে মনে রাখবো। এই ইকুয়েশনটা ভেরিয়েবলের আসবে v হবে। লেখা write this, write this next is stable for no y,
stable for no coil. If volume of the reactor and product is 0, if volume of reactants and products are same, then del V equal to 0. If volume of reactants and products are same, then del V equal to 0. If del V equal to 0, then W equal to how much? W equal to 0 because W equal to P del V. Then del V 0 minus 0 into 0 something 0, that is 0. That is 0. So if del V equal to 0, then W equal to 0. So if W equal to 0, then the equation becomes del H equal to del E. Because I mean del H equal to del E plus P del V. This term का 0 आएगा, तो 0 आएगा del H equal to कितना है? Del E. If volume of reactant and product are same, volume of reactant and product same असला माने V2 equal to V1. So V2 minus V1 equal to V1 minus V1 equal to 0. Volume of the reactants and product. Reactant का volume अच्छी suppose V1, product का volume अच्छी V2. तो V2 equal to V1 से करें. तो V2 minus V1, V1 minus V1 equal to 0. So del H equal to del E plus P del V. ये कितना है? 0. This is 0. So del V equal to 0, W equal to 0, del H equal to del E. Del H equal to del E. Next, for gaseous system. Next is like this. For gaseous system, for gaseous system, for gaseous system, reactions are generally carried out at constant temperature and pressure. Reactions are generally carried out at constant temperature and pressure. We know that ideal gas equation, ideal gas का पढ़ाई नहीं ऐसे स्टेप में पढ़ा जाएगा. We know that PV equal to nRT. ये देखो ideal gas equation PV equal to nRT. 80. We know that for gases. We know that for gases. Gas पाई हमें equation का पढ़ी चाहिए. हमें पढ़ी बता रहा हूँ गैसेस स्टेट का पढ़ियो कोई PV इक्वल टू कितना है nRT. PV इक्वल टू nRT. P वाला प्रेशर, P वॉल्यूम, N वाला नंबर ऑफ मोल्स, R वाला गैस कांस्टेंट, T वाला टेंपरेचर. मात्र कोई नहीं. P वाला प्रेशर, B वाला वॉल्यूम, N वाला नंबर ऑफ मोल्स, R वाला गैस कांस्टेंट, T वाला टेंपरेचर. So P1 V1 equal to N1 RT. P V2 equal to N2 RT. P V1 equal to N1 RT. P V2 equal to क्या है N2 RT. बता मेरे को माइनस कर दियो. P V2 minus P V1 equal to N2 RT minus N1 RT. So P constant वाला V2 minus V1 एटी N2 minus N1 RT. चलो एटी क्या दासो P del V equal to del N G RT.
why I am writing G काहे कि मुझे लिखली परे कहूची हैला ए इक्वेशन ला तुम इक्वेशन 1 रे पुट करा आमे जो इक्वेशन जानि थिले del H इक्वल केते थिला del E plus P del एटा बडे इक्वेशन 1 थिला एटा देखो पूरी भाषा डिराइव करथले इक्वेशन 1 थिला बतन एटा को एटा करदवा इक्वेशन 2 एटा को इक्वेशन 1 थिला putting the value of P del V from equation 2 in equation 1 we can write del H equal to del E plus del H এইটা আমরা ডিরাইভ আমরা এই ইকুয়েশনটা মনে রাখি এইটা তোমরা মনে রাখি দিস ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন del H and del E এই রিলেশনটা মনে রাখিବାକୁ পড়িব দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই রিলেশন আর অন্য গুড়া মনে রাখলে চলিব ডিরাইভ করে দেবে মনে রাখলে চলিব না রাখলে চলিব কিন্তু এই রিলেশনটা নিহাতি মনে রাখি হোয়াট ইজ del E change in enthalpy del E sorry del H change in enthalpy del E change in internal energy. What is del G? এইরকম del G number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous del G को number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant এটা একটা ভ্যালু ইম্পর্টেন্ট number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant বর্তমান মু গোটা শিখে দউছি number of moles টা কেমতি কাढी পতা ধর একটা রিঅ্যাকশন আছে N2 gas 3H2 gas এটি আছে 2NH3 gas बता दे 80 नंबर ऑफ मोल्स केते अछि कोएफिशिएंट केते 1 80 कोएफिशिएंट केते 3 80 कोएफिशिएंट केते 2 तर प्रोडक्ट साइड अछि 2 मोल्स रिएक्टेंट साइड केते अछि 1 plus 3 4 moles रिएक्टेंट साइड है reactant side 4 moles product side 2 moles reactant side केते अछि 4 moles product side 2 moles del G कोन देला number of moles of gaseous product केते अछि 2 minus number of moles of gaseous reactant केते अछि 4 तरो ए रिएक्शन पाई del G केते आसीबो ए रिएक्शन पाई del G केते आसीबो प्रथम देखो ए रिएक्शन पाई del G आसीला 2 minus 1 plus 3 that is 2 minus 4 minus 2 बता इला minus 2 तरह की पके देला del H केते आसीबो del H equal to del E minus 2 ए इक्वेशन में यदि पके देबो del G रो वैल्यू केते minus 2 del G minus 2 ए जो del G रो वैल्यू minus 2 रा इदि पके देला केते आसीबो del H equal to del E minus 2 RT del H equal to del E minus 2 RT clear del H equal to del E minus 2 RT clear so del H equal to del E minus 2 RT del H equal to del E आमे जानि छे del H equal to del E plus del G RT बता del G है number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant number of moles of gaseous product केते अछि product अछि 2 reactant अछि केते 2 3 plus 1 4 so 2 product minus reactant always এটা মনে রাখিও number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant এটা আর ক্লাস नेक्स्ट क्लास आ ऊपर मु टिके प्रॉब्लम करेबे दी चारटा आ गोटे कांसेप्ट पाइबे एटा होला नंबर ऑफ सबले मोल गैसियस जदि सॉलिड किबा लिक्विड थिबो सेटा जीरो आसे तार प्रॉब्लम कला रे मार्के कहबो हला
next class I will solve the problem basing upon this. ଆଉ ଟିକେ ଆର ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟେ ମନେ ରଖି ଆସିଥିବ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ del h equal to ଏତିକି ଏଇରେ ତିନିଟା କେସ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହି ଦଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବି del n g ପଜିଟିଭ del n g ନେଗେଟିଭ del n g 0 যদি del n g পজিটিভ আসিব এটি দেখো পজিটিভ ভ্যালু তাহলে del h greater than del e del h less than del e del h equal to এই যে del n g টা ভ্যালু এইটা পুট করিব যদি পজিটিভ ভ্যালু পুট করিব del h ইকুয়াল ধরা প্লাস আসছে তাহলে del h কেতে আসে del h ইকুয়াল টু del e প্লাস 2rt তাহলে del h টা del e ଠାରୁ ଅଧିକ ଆସିବ বিকজ del h ইকুয়াল টু del e প্লাস এই জিনিসটা হচ্ছে তাহলে del h ইকুয়াল টু del e ଠାରୁ ଅଧିକ ଆସିବ যদি এটা মাইনাস আসিব del h equal to del e minus 2rt then del h less than del e যদি 0 আসিলা del h equal to del e थैंक यू এটা পড়িকে আসিব নেক্সট ক্লাস মু প্রবলেম করিব বেসিক अपॉन दिस आई विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स क्लियर थैंक यू